Hi everyone, I am your teacher, mentor, and guide Arpita Sharma, and I know that in 2026 prelims only few days are left. Notification अभी postpone हुई है, एग्जाम नहीं हुआ है. So you have to prepare for the exam. Please इस बात को गांठ बांध लो. I can see a lot of students spreading rumors कि एग्जाम postpone हो जाएगा. अरे आप अपनी तैयारी पे ध्यान दो. Consider कि आपका एग्जाम उसी टाइम पे होना है जिस टाइम पर यूपीएससी ने ऑलरेडी बताया हुआ था. ठीक है. Now always remember that notification kabhi bhi aa sakti hai, so you have to keep your documents ready if you're preparing for 2026 prelims. Secondly, revision mein koi kami nahi aani chahiye, but in the next 3 months what should our ideal study plan look like? I'm going to share that in this session, but in the comment section I want all of you to tell me, have you prepared your own study plan, and if yes, are you following it? ये मुझे बताओ फटाफट से. ठीक है, let's get started everyone. All right. तो इस सेशन में कोर फिलोसफी, व्हाट इज द कोर फिलोसफी दैट वी आर गोइंग टू कीप इन दिस सेशन. आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज टेक आउट योर स्ट्रैटेजी रजिस्टर वेर एवर यू आर मेकिंग योर स्ट्रैटेजी टाइम टेबल प्लानिंग. मैं तो ऐसी किया करती थी. तो आई यूज टू कीप अ स्मॉल डायरी वेर आई यूज टू राइट डाउन व्हाट आई एम थिंकिंग एंड हाउ आई नीड टू स्ट्रैटेजाइज इट इन अ मच मोर स्मार्टर वे. ऐसे मेरा टाइम टेबल हर बार, चाहे कॉलेज हो, सीए के एग्जाम्स हो, यूपीएससी हो, हर बार आई वॉज एबल टू फॉलो इट विदाउट एनी लास्ट मिनट पैनिक. Okay, so always focus on writing. Core philosophy for the next few months, what are we going to keep? First core philosophy हमारी रहेगी that our revision should be more than reading, right? मतलब हम जितना रिवाइज कर रहे हैं ना वो हमारे रीडिंग से ज्यादा होना चाहिए. बट ऑब्वियस, राइट? The more you read and the less you revise, the higher the chances that you are going to panic and forget everything. So revision should be prioritized because prelims rewards familiarity. It rewards recall. It does not reward novelty. So always remember, revision reading से ज़्यादा होनी चाहिए in the next 3 months. Then the next core philosophy that we will follow is multiple cycles of revision. This would be the next philosophy. Multiple cycles revision के हमारे होंगे. One revision is never enough. You have to aim for 3 to 4 structured cycles. Okay. Then the third philosophy would be test, analyze. Test, analyze. This and also correct. This should be the loop that we are going to follow. This loop we are going to follow. Mock test or previous year questions you are solving, analyze and then correct your mistakes. This is the loop जो हम follow करेंगे. And next fourth would be high frequency touch with core subjects. This would be the entire cycle. Revision ज़्यादा होगी, multiple cycles of revision लगाएंगे हम. 3 to 4 structured revision cycle. Test, analyze, correct का loop बनाएंगे. High frequency touch with core subjects, polity, economy, geography, environment must recur weekly in your revision timetable. Okay. Now we are going to break down the entire phase. Now we are going to divide the entire 3 months into different phases. 4 phases में divide करेंगे. Phase 1 would be consolidation phase. इसको हम consolidation phase बनाएंगे और इसके अंदर हम ना first full revision करेंगे. We are going to complete our first full revision in this phase. Date would be starting from today 20th Jan till Feb end. That would be the phase 1. और ऑब्जेक्टिव इसमें एक ही रहेगा अपना. वी हैव टू फिनिश द फर्स्ट कंप्लीट रिवीजन ऑफ ऑल प्रीलिम सब्जेक्ट्स एंड वी हैव टू स्टार्ट विद सेक्शनल टेस्टिंग ऑल्सो. अपने सेक्शनल टेस्ट लगाना भी हमको शुरू करना होगा इन फेज 1. ऑल राइट. अब इसका एक वीकली स्ट्रक्चर बना लेते हैं. राइट, वी विल क्रिएट अ वीकली स्ट्रक्चर फॉर फेज 1. प्लीज टेक आउट योर रजिस्टर्स और डायरीज जहां पर यू कैन क्रिएट दिस टाइम टेबल विद मी. So we are going to first create a weekly structure. Now what are we going to do? We are going to study 6 days की study होगी हमारी. 6 day study plus 1 day would be for test and analysis. And then next 8 to 10 hours per day we are going to study. This is the net productive time. Okay. I am going to give you an example ki how you have to do subject allocation. You can change it as per your own convenience. You may adjust the order but do not adjust the logic. Okay. So week 1 to week 2, example दे रही हूँ, polity.
In polity, Lakshmikant book is very very important. Lakshmikant book plus previous year questions. देन एनवायरनमेंट में स्टैटिक प्लस करंट आप रिवाइज करोगे. देन वीक थ्री यू विल स्टडी ज्योग्राफी. नॉट ज्योग्राफी, मैं ज्योग्राफी वीक थ्री के लिए नहीं रखूंगी. वी विल कीप इकोनॉमी फॉर वीक थ्री. ओके, इकोनॉमी में अगेन कॉन्सेप्ट प्लस करंट अफेयर लिंकेज. Then comes week 4. In week 4, I'll keep geography, physical geography plus Indian mapping. Remember it. Then week 5. Week 5 में we'll keep history. History में both modern history and art and culture. Then comes week 6. Week 6 में science and technology plus international relation plus any miscellaneous current affairs which are left. You have to cover them. ओके. अब डेली आप स्प्लिट कैसे करोगे सब्जेक्ट्स को या टॉपिक्स को? ऑलवेज रिमेंबर 60 to 65% time should be given to revision in a particular day. Your notes, underlining, recalling, that can be done. 25 to 30% time should be given to MCQs, और MCQs की frequency 50 to 70 per day. Okay, and 10% आप टाइम दोगे एनालिसिस में. यू कैन कीप अ नोटबुक फॉर एनालिसिस वेर यू कैन राइट डाउन द मिस्टेक्स दैट यू कमिटेड एंड हाउ यू नीड टू करेक्ट देम. ओके. टेस्ट की अगर हम बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट टेस्ट, रिमेंबर सेक्शनल टेस्ट आपको देने ही देने हैं एवरी 2-3 days. एवरी 2 to 3 days. ओके. एंड वन मिक्स्ड टेस्ट एवरी संडे. हर संडे को आपको ये एक मिक्स टेस्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव कवर्ड इन द वीक यू हैव टू गिव इट. अगेन दैट कैन बी डन थ्रू योर सुपर कलाम. आपके पास सुपर कलाम है, राइट? यू गो टू सुपर कलाम and on super kalam you go to MCQ practice, install the app for it. prelims के PYQs को practice कर सकते हो. so everything can be done over here. ठीक है. now let's go to phase 2. फेज 2 वुड बी स्ट्रेंथनिंग फेज. ठीक है, तो ये फेज हमने अभी जो फर्स्ट रिवीजन खत्म करी है हम उसको स्ट्रेंथन करेंगे एंड इट वुड बी फॉर सेकंड रिवीजन. ओके, तो यहाँ पर 1 मार्च से 31 मार्च का ये पीरियड रहेगा फेज 2 का. ठीक है. व्हाट आर वी गोइंग टू डू ओवर हियर इन दिस फेज? लेट मी राइट इट डाउन सो दैट आपको याद रहे. दिस फेज वुड बी फॉर सेकंड रिवीजन प्लस टू इम्प्रूव accuracy plus to eliminate the weak areas. Okay, 1st March to 31st March. This you have to remember. Now what are we going to do in second phase? Let us write it down. phase 2 में first you have to do some changes from phase 1. that means आपका जो reading time we have to reduce it. then MCQ practice की जो volume है, the number of questions we have to increase it, and analysis has to become deeper. These are the changes that we will do in phase 2. let us make a weekly plan. अब एक weekly plan बनाते हैं. in phase 2 what are we going to plan? 2 subjects per week we are going to do. ठीक है. then 2 sectional tests plus 1 full length test per week we are going to do. Okay, focus areas क्या रहेंगे इस week में हमारे? what will be the focus areas here? first would be statement based questions we have to practice. statement based questions or MCQs. frequently confused facts, जो facts पे आप trip कर जाते हो, you have to revise them, practice them. you have to learn and master the elimination techniques, and you have to interlink static plus current को interlink करना ही करना है through MCQs only. now what will be the targets that you have to achieve by end of March? What are the targets? you have to first score consistently 90 to 100 plus in FLTs. Okay. second, you should have clarity on fundamental rights versus DPSPs. monetary, please write these topic down. monetary versus fiscal tools.
mapping, mapping based geography and environment, conventions and species, conventions and species. These are the pointers that you have to focus on. ठीक है, in phase 2. क्लियर हो गया यहाँ तक? इवन इफ स्कोर इज लेस, नो इश्यूज, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर एरर रेट should go down with every MCQ. All right. Then comes the next phase, which is phase 3. अब phase 3 में time period would be over here 1st April से 30th April. And here you have to stimulate the exam conditions. You have to improve your temperament. इधर यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, व्हाट आर वी गोइंग टू डू, लेट अस क्रिएट अनदर प्लान फॉर फेज 3. फेज 3 के लिए भी एक प्लान बना लेते हैं. दिस इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट. फेज 3 ऑब्जेक्टिव आपको पता है, व्हाट आर वी गोइंग टू डू, 2 फुल लेंथ टेस्ट पर वीक इनिशियली. यू हैव टू इंक्रीज, you have to increase the length test to 3 per week by end of April. All right, intensity बढ़ानी है. Post test analysis is very important. You cannot just give the test and forget about it. Post test analysis करना ही करना है. For every test you have to categorize. How to categorize, let me teach you. Categorization में you have to categorize your mistakes into knowledge gap. What were the questions that you did not mark correctly because of knowledge gap, because of overthinking, because of poor elimination, because of silly mistakes, and you have to update last minute notes, जिसको हम LMN भी बोलते हैं, according to your revision, the MCQ practice and current affairs. All right, revision strategy इसमें कैसी होनी चाहिए, daily 2 to 3 hour quick revision slots. No bulky reading, only short notes, the error notebook that you have maintained, make sure that the error rate is coming down, and previous year questions. That's it. Okay. And then comes the phase 4. Phase 4 is very very important. ये आपका फर्स्ट में से till your exam day चलेगा. ठीक है. What do you need to do in phase 4? Retention, focus on retention, confidence and calmness. What to revise? पॉलिटी के आर्टिकल्स रिवाइज कर लिए. ठीक है. स्केड्यूल्स रिवाइज करने हैं. डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यू हैव टू रिवाइज. Environment, species and conventions, maps, economy, current terms in news and economy, that you have to revise. Government schemes you have to revise. Government schemes are very very important. 10 years PYQs are very important. Again you have to revise it. तीसरी बार third revision of PYQ हो जाएगी यहाँ पर. And avoid any new source, any new book, crash course, etc., any random PDF over discussion, and give one test every 3 to 4 days. One test is important. Stop the full length test 7 to 10 days before the exam. Okay. Daily non negotiables क्या होने चाहिए, that 10 to 15 minute revision of PYQ is must every day. मैप को आपको रिवाइज करना है हर दिन 15 मिनट. गिव 15 मिनट टू रिवाइज मैप्स एवरी डे. ओके. And if not 50 to 70, then 30 to 40 MCQs तो daily you have to practice. All right, because discipline beats intelligence. Always remember, revision beats expansion, analysis beats attempt count. ठीक है. So you have to make sure that this is the core philosophy that you follow, and this is how in phases you have to revise and complete your revision. All right, let me know इसके अलावा क्या डाउट आ रहा है. What is the fear that you have for 2026 prelims exam, and I will solve that fear in the comment section. Do share your fear, the one thing that you are scared of the most. Let me know.